स्टार्टिंग द टॉपिक टॉर्क. ओके, टॉर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको समझो. बिकॉज वी नो द टॉर्क, व्हाट यू नो, देयर इज समथिंग डिफरेंट. टॉर्क इज समथिंग डिफरेंट. सो देखो, टॉर्क जो होता है, दिस इज द, वी कैन से टॉर्क इज द, you can say rotating ability of a force. Rotating ability of a force. For a certain force, this is the rotating, what is the tendency? This is the agency, or you can say this is cause of angular acceleration. Angular acceleration. ठीक है. That is also called moment of force. That is also called moment of force. In physics, anything r cross anything, r cross vector r cross anything is called moment of that thing. R cross f, moment of force. R cross momentum, moment of momentum. R cross field, moment of field. R cross any quantity is called moment of that quantity. ठीक है. Now we define torque in two ways, two things. First is torque about a point, and second is torque about an axis. ठीक है. So let us see torque about a point. How we define torque about a point? Suppose this is a point A, and this is a point P. At this point P, you have applied a force F. At this point P, at this point P, you have applied a force F. ऐसे ले लो, किसी भी डायरेक्शन ले लो. सर हाँ, सर ये मोमेंट होता क्या है? मूवमेंट, ग्रेडियंट क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन सर डिस्टेंस के टर्म में. होता है ना, उसका नाम है ना वो. यस सर. तुम्हारा नाम अतुल केसरी क्यों है भाई? नाम दिया गया है. रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद टाइम इज कॉल्ड रेट. यस सर. फिजिक्स में एवरीथिंग इज डिफाइंड है बाय नेम ना, उसको एक नाम दिया गया है. देखो, this point is A, this point is P. Here you applied a force F. Now understand that this force may not be in the same plane. This force is three-dimensional force. This force is three-dimensional force in any direction. If you want to find torque about point A, we can say torque about point A. Torque about point A. We define it by torque about A. This is the tau, symbol is tau. Tau about A is equal to AP cross F. AP cross F. Position vector of the point of application of force. The position vector of the point of application of the force with respect to point about which you want to calculate the torque. Cross F. AP cross F. I can call this as position vector R. So that is R cross F. Now remember this F. This F is a vector sum of all the forces. F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. If two or three forces are acting here, this force is the vector sum of all the forces. And if this point has position vector R1 and this point has position vector R2 with respect to some origin, then this R vector is R2 vector minus R1 vector. So I can write position vector of A, position vector of P minus position vector of A cross summation of all the forces F net. This is called, defined as torque about point A. This is defined as torque about point A. This is defined as torque about point A. Agreed? Now if you see this torque becomes like this. If we go for the expression of this, then I would be getting that torque in magnitude would be equal to R into F into sin theta, where theta is the angle between this position vector
angle between this position vector and force vector. If angle between position vector and force vector is theta, then this is r into f into sine theta. R into f into sine theta in magnitude. I can write it in two ways. R sine theta. I can write r into f sine theta. Or I can write it r sine theta into f. What is the difference between them? This means take the distance of the point, take the component of force perpendicular to distance. This is r into f perpendicular. How? We can resolve this force into two components. I can resolve this force into two components. One component is parallel to position vector and one component is perpendicular to position vector. This is f cos theta and this is f sin theta. This is useless. This is useless. F parallel have no role in the torque. Only F perpendicular have. So take this distance and resolve the force. Or another method is that extend the line of this force. Extend the line of action of this force. Extend the line of action of this force from 0 to infinity. Now, take the component of the position vector, one perpendicular to this line of action and one parallel to this line of action. This is r parallel and this is r perpendicular. So in that case, do not resolve the force. Force is as it is. Force is as it is, and you can write it. This is r perpendicular into force. Either force, so force into perpendicular distance between line of action of force and the point, or distance into the component of force perpendicular to position vector. That means you have both the methods, you would get the same torque. ठीक है, ये होता है torque का definition point के about. This is the definition of torque about the point r cross f. R perpendicular into f. Do not resolve force, resolve position vector. Get the component of position vector perpendicular to line of action of force. Or do not resolve position vector, resolve the force and take this distance same, whatever it is, without any resolving, and take the component of force perpendicular to position vector. There are two methods. Both would give you same answer. Now, how to find torque about an axis? How to find torque about an axis of rotation? देखो, how to get torque about an axis of rotation, and understand it very clearly, very clearly, because I fear that IT may ask a question based on its definition only, which we don't know generally many times. So, torque about an axis of rotation. Understand, we are finding torque about an axis. So, suppose this is an axis, any line, and I have a force here. Acting at point P in any direction in 3 dimensions. In 3 dimensions, it can be in any direction. So this is a force acting somewhere like this. Take at this point P, a force is acting like this. You have been asked to find the torque of this force about this axis. So first of all, understand the meaning of the torque. Meaning of the torque about axis is, take any point A on this axis. With respect to this point, take any point on this axis A. About this point, find the torque of this force. So torque about point A. First calculate torque about point A is equal to, that would become AP cross F.
position vector cross F. Once you got this AP cross F, call it position vector R cross F. Now the component of this torque in a direction parallel to axis, this torque would have many components. The component of this force parallel to the axis, the component of this torque parallel to the axis is called torque about axis. So torque about axis is equal to component of this torque along axis of rotation. That means if I want to say vectorially, I can write AP cross F, AP cross F. And if a unit vector in this direction, is n cap, if the unit vector in the direction of axis is n cap, this dot n cap is the magnitude. Component of any vector in the direction of certain vector is this dot n cap, and in direction it becomes along the axis. So this is the axis. So this axis is, so if you want to give this the magnitude times of direction, this is the torque about axis. This is torque about axis. So IT would ask you a question where they would give you certain direction, axis have certain vector like AI cap plus BJ cap plus CK cap. So you can get n cap, AI cap plus BJ cap plus CK cap divided by under root A square plus B square plus C. You would get n cap. Then they would ask you, there is a point on this axis whose coordinate is x1, y1, z1, and a force is applied at point x2, y2, z2. So then AP vector would become x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. After that, they would tell you that at this point the force applied is fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. Find the torque about this axis. Now this is the real meaning, but it is very difficult meaning, although it is the real meaning. So how to go for simplicity? Because we go for simplicity. So what we do is that we resolve this vector first into two parts. और समझना मैं इसको जो है बता रहा हूं ढंग से. हम क्या करते हैं? We are going to resolve this vector R vector into two parts. Which part? One part is this and one part is this. We call this R parallel. R along axis, and we call this as R perpendicular. So this vector can be resolved into two components, one along axis and one perpendicular to the axis. Okay, this is useless. कोई काम नहीं इसका. So just what you have to do is that drop a perpendicular from the point of application of the force on this, call it O. Drop the perpendicular from the point of application of the force on this line. This is R perpendicular. Now come to this force. This force also have three components. Which component? One component is along this position vector, along this R perpendicular. This is parallel to, call it Fx, or this is parallel to R. This is parallel to R perpendicular. देखो इसके डायरेक्शन में. दूसरा परपेंडिकुलर टू दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू एक्सिस. एक पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, सेकंड पैरेलल टू एक्सिस, एंड थर्ड पैरेलल टू नाइदर. थर्ड इज टुवर्ड्स यू. हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं. थर्ड इज perpendicular to both position vector and axis. So this direction towards you is perpendicular to R vector, as well as this is perpendicular to this axis. This is perpendicular to both. This is perpendicular to R perpendicular
पोजीशन वेक्टर एंड एक्सिस बोथ। अब समझो, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ ये टॉर्क देता है। मींस torque is basically torque about axis is basically torque about axis is basically R into F, where R is perpendicular distance between point of application of the force and axis. This is perpendicular distance between axis and point, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया था, एंड दिस एफ इज द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ आर परपेंडिकुलर ओपी वेक्टर, आर परपेंडिकुलर एंड एक्सिस। कहोगे ऐसा कैसे होता है? समझो इस बात को। दिस इज ए डोर, this is a door. Now I cannot have the door here, otherwise all my classroom there is a door in which on the back side of door there is a line I have drawn, and that line remains permanently, nobody rubs it. So this is the door. I have to open this door about this axis. This red line is the axis. About this axis I have to take it out. So what I am doing is that, suppose at this point I have to apply the force to open this about this axis. So what I am doing is that from this point I drop a perpendicular. From this point I drop a perpendicular, and I call this point as point O, and I call this point as point O. From this point, wherever I have to apply the force to open this door, I drop a perpendicular here. I call this position vector. This is the O and this is the position vector, R vector. Now understand that this R vector is perpendicular to axis. This is the axis, and this R vector is perpendicular to this axis. Now, if I apply a force like this, means along the radius outward, if I apply the force like this, would it open? No. If I take a door and try to pull it like this, if I take a door and try to pull it like this outward, it would not open. Why? Because for this force outward, for this force that is acting outward, R cross F, about this point torque is 0, and once about this point torque is 0, the component of this torque, the component of the torque about point O, find the torque about point O and then take its component in the direction of axis. So once this is 0, its component also is 0, so it has gone. Second case, I am pulling this upward. Means I am applying the force in the upward direction. I am pulling this door, handle of the door in the up direction. Is there a torque about point O? Yes, R cross F. देखो R इस डायरेक्शन में है, F इस डायरेक्शन में है, तो R cross F ऐसा होगा। देखो R इस डायरेक्शन में है, फोर्स मैंने ऊपर लगाया है, so R cross F, R position vector in this direction, F in this direction, R cross F towards you. This is towards you. R vector cross F vector towards you. तो यानी कि R cross F इस डायरेक्शन में होगा। समझो क्यों? R वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सो R cross F is going to be perpendicular to this board and towards you. ये होगा R cross F का डायरेक्शन। Now this R cross F is perpendicular to this axis. This R cross F is perpendicular to this axis. So what is the component of this R cross F? About this axis, 0. समझो, there is a torque about point O. There is a torque about point O, non-zero. But since that torque is perpendicular to this axis, the component of this torque along this axis of rotation would be 0. So again, the door would not open. Now see third thing. This is suppose Z axis. This is suppose X axis, or this is suppose Y axis. This is suppose X axis. If you are applying a force in Z axis, then it will rotate it. Why? Because once you take like this,
Once you take like this, what is r cross f? R is position vector is outward. Position vector is outward. R is here. So r cross f means downward. See, r, this is a position vector, outward. Position vector is outward. Your force is towards you. So r cross f. So r cross f is downward. So r cross f is in this direction. And this is completely, the component of this is completely this. So what you have to do is understand, कभी भी कोई question हो, only force that matter. And since this diagram is 3-dimensional, it is always very complicated. To avoid this complication, what we do is that we always show, for simplicity, we always show the axis normal to the plane, perpendicular to the plane, normal to plane of paper. We always see so, because this is 3 dimension. So what we are going to do is that we are going to show the axis of rotation perpendicular to the, like this. So this is a pulley. This is a pulley. So I am showing this as the axis. Axis is perpendicular to the plane of the paper. After that, I would show this R and this F in this plane. Now suppose this is your axis of rotation. This is your axis of rotation. This is your position vector. Getting? This is axis along z direction. This is position vector. Now at this point, you can apply 3 forces. One, this force. One, this force. And one, this force. देखो, ये ओरिजिन है, मान लो दिस इज सपोज x डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन में मान लिया x डायरेक्शन, एंड दिस इज y डायरेक्शन. या इसको इस तरह मत ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो, सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर. एट दिस पॉइंट यू हैव 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स. कौन कौन सा? fx, fy एंड टुवर्ड्स u, दैट इज fz. towards you, fz, normal. You have to get about this axis. तुमको इस axis के about टॉर्क निकालना है. इस axis के about. ये फोर्स किसी काम का नहीं है. क्यों नहीं है? Because this is parallel to position vector. ये फोर्स fz किसी काम का नहीं है. क्यों? ये क्या है? Parallel to axis. This is also useless. Any component of the force parallel to fx and parallel to position vector or parallel to axis is useless. The component which is perpendicular to position vector as well as axis. देखो, ये axis z में है, ये इसके perpendicular है. Axis and this is the only component that works. And in that case, torque becomes equal to simply r into fy. Torque is equal to simply r into fy. This is the torque. तो हम यही करते हैं. Always we show the diagram in the plane. Always we show the diagram in the plane. And axis is always perpendicular to the plane of the diagram. हम axis को कभी भी plane में नहीं दिखाते हैं, हम उसके normal दिखाते हैं. And once you get that, your formula simple is from that point shown on that plane, the axial point shown on the plane, just take the distance and force perpendicular to that. R into F. R into F. ये होता है torque. ये होता है टॉर्क. अगेन आई एम सेइंग, वंस द क्लास इज ओवर, आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स विथ यू. इसका पूरा नोट्स बना हुआ है. आई वुड शेयर द नोट्स. ठीक है, बिकॉज इफ आई वांट टू टेक टॉपलिंग, फॉर बिफोर टॉपलिंग आई हैव टू टेक व्हाट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. टॉर्क के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी some illustrations. I can have very good questions on based on that, like the given in Aerodome or those kind of things. But so this is how we calculate torque. Now understand this, that in the case of torque, once you have calculated the torque, so first case, with the case we are going to take illustrations. I want to take toppling first, but before toppling I have to do some illustrations. Okay, so understand that what is the meaning of equilibrium? Equilibrium means net force 0,
net torque 0. That means summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, summation of fz is equal to 0. That means torque about any axis is 0. Torque about any axis is 0. इसका मतलब है torque about any axis is 0. ठीक है? This is the meaning of equilibrium. So let us see the cases of equilibrium. Let us see the cases of equilibrium where we can have certain kind of, suppose this is the case. This is a rod. This is given that this is the rough surface. This is the rough surface. And this is smooth wall. This is smooth wall. And we have been asked to find this angle is theta. This is mass m, length L. This is the mass m and length L. And we have to find normal and frictional force at the 2 points of contact. This is the angle theta. This is the rough ground. And this is smooth wall. This angle is theta. This is uniform rod. We have to find what is normal and friction like that. So what we are going to do is that first of all here you would get a force normal. Call it N2. Here there is no friction. Normal is N2. Here you are going to get N1. And here you are going to get frictional force. I am not writing this frictional force as mu into N1 because this is not the limiting case. This is not the boundary case. This is one of the this friction is not at its maximum value. Here there is a force mg at the center of mass. Length is L. Length of the rod is L. Center of mass length is this is L. So what would you get? First of all, if this is in equilibrium, that means fx is 0. Fx 0 means what? Fx 0 means what? Right and left cancel out. Right and left cancel out. यानी कि fx 0 implies f minus n2 is 0. So n2 is equal to frictional force. Second, fy 0. Fy 0 implies mg and n1. n1 minus mg is 0. So normal is equal to mg. Normal here is equal to m into g. Third, I have a point. This is A point, this is B point, this is the center C point. This is A point, B point and C point. A point, AB is the rod and C is the center of mass. Now, I have to find the torque. Torque about any axis would be 0. Because this is in rotational equilibrium, torque about any axis is 0. But best axis is the axis. Best axis is the axis through which maximum forces are passing. Understand? If there are 100 forces are there, and if 98 forces pass through point A, one pass through point B and one pass through point C. If I want to take torque about point B, then I have to calculate torque about point A. In that case, 98 torques have to be calculated. But if I want to find the torque about point A through which 98 forces are passing, all the torque is 0. So my equation is most simple. So always go for the axis through which maximum number of forces is passing. In this case, 2 forces are passing through A, 1 force through C and 1 force through B. So better to take torque about A, because in that case calculation is simple, answer is same in all the cases. Torque about point A. So once I am taking torque about point A, that means I am saying that this is the axis. I am not showing the axis. I am not taking about point A, about an axis passing through point A. I am taking torque about axis passing through point A. That means I am showing the axis perpendicular to the plane of this paper. That means torque of F is 0 because this is passing through A. Torque of N1 is 0
and torque of N2 would become in this direction. What is the torque of N2? So line of action of N2 is at a distance of, the line of action of N2 is at a distance of, this distance is what? L sine theta. The line of action of N2 from this axis is at a distance of L sine theta. So that means N2 into L sine theta. N2 into L sine theta. And what about mg? See, mg is acting at a distance of, what is the line of action of, distance of line of action of mg from point A. This distance is, the line of action of mg is this, and from this point A, this distance is L by 2 cos theta. So this would be equal to mg into L by 2 cos theta. So clockwise torque must be equal to anti-clockwise torque. Clockwise torque must be equal to anti-clockwise torque. That means I can write N2 into L sine theta is equal to mg into L by 2 cos theta. That means I got L and L is cancelled. I'm going to get N2 is equal to cot theta by 2. mg cot theta by 2. mg cot theta by 2. So N2 I got N1 is equal to mg, and once I got N2 I got friction also. If the question is additionally asked, what is the limiting case? What is the limiting case? In limiting case, you have to place F is equal to mu times of N1. You would get additional answers. One important thing is that we can verify this N2, the contact force here, and this mg, the contact force here, they meet here. The line of action of N2 and mg meet here. Then the resultant of these two would also meet here. Means all the forces are concurrent. In any rotational equilibrium, in any case of rotational equilibrium, all the forces, there is some point in space through which all the forces pass. Means all the forces must be concurrent, because if I take torque over this point, every torque is 0, because all the forces pass. So this normal is here, this is here, so I can get the coordinate of this point. I can solve it in one step also. So I can get that the resultant of this friction, this is the contact force, resultant of this friction and normal, they should also pass through this point. Otherwise it cannot be in rotational equilibrium, because if this is a point C, that is a point of intersection of B and N2 and mg. N2 and mg meet here. If these two resultant contact force do not pass through this, then there is non-zero torque about this point. See, that is not possible. Always in rotational equilibrium case, all the forces are concurrent. There is some point in space through which all the force line of action forces passes. If you can find that point, we would see that in instantaneous axis of rotation. ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ठीक है. Now, imagine that I have a different question. And question is this. Suppose I have a different question. This is a cubical block. Length L, this length L. This is a cubical block like this. Now you are pressing it from here or pulling it from here. Here there is thread and you are pulling it through this thread. You are pulling this block. This is kept on a rough surface. So this is rough surface. Now you are pulling it from here.
You are pulling it from here at certain height h. You are pulling it at a certain height h. You are pulling it at certain height h. You pull it by force F naught. Pull it. It is not moving. It is not moving. It is not moving. So draw the force diagram first. So generally what we do is that we do it like this. We take mg here on center of mass, mg on center of mass, normal here, normal here, friction here, applied force here. This is the diagram generally we do. Is this diagram correct? Is this diagram correct? Now normal minus mg is 0. Okay. F naught minus F is 0. Okay. This is the point A. That is the point of concurrency of normal, mg and friction. Normal, mg and friction, they all meet at this point A. See, this point A on the ground is the point, common point of concurrency of this, the point through which friction, normal, mg all passes. So torque of mg about point A is 0, normal about point A is 0 and torque of friction about point A is 0. But there is a torque about this force F naught about this point A. So ये जो this force have a torque. So that means in this diagram we are getting that about this point A there is a unbalanced torque by of F naught. So this diagram do not justify rotational equilibrium. This diagram जो हमने बनाया है, this diagram, this force diagram do not justify rotational equilibrium, because your every direction, your every force diagram should explain, validate the practical condition. Practical condition is that neither it is accelerated nor it is rotated. So if about point A, mg have no torque, friction have no torque, normal have no torque, but F not have the torque, then that means there is unbalanced torque. So this diagram is wrong. This diagram is wrong. What is wrong in this diagram? Normal would not be acting like this. Normal यहाँ नहीं लगेगा. Now normal is going to shift. Normal is going to shift. The normal would move. The normal would move its line of action to prevent rotational motion. It is the duty of friction. It is the duty of friction to prevent translational motion. It is the duty of normal to prevent rotational motion. So normal would shift here. Normal would shift here. Normal अपना line of action यहाँ shift कर लेगा. Normal would not be passing through the center. Normal center of mass से pass नहीं करेगा, सामने चला जाएगा. क्यों चला जाएगा? Why normal goes like this? Why normal goes like this? If I place this on a table, every part have equal mass. So here length, here length, here length, here length, every part have equal mass, equal weight. That is why in this case normal is distributed uniformly. समझो, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी ग्राउंड के ऊपर किसी ब्लॉक को रखते हैं, when we place something on the ground, the normal is distributed uniformly. This is the normal, this is the normal, this is the normal, this is the normal and this is the normal. समझो, ये होता है नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स इक्वल लेंथ का इक्वल वेट, इक्वल लेंथ इक्वल प्रेशर लगा रहा है धरती पे. लेकिन जैसे तुम इसको यहां से पुल करोगे, once I start to pull it like this, it becomes dangerous. Why it becomes dangerous? See, it becomes like this. Once I pull it from here, अब इमेजिन करो ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट, इसके ऊपर टॉर्क कैसा है? The torque about this center of mass due to this applied force F naught, the torque about this center of mass is clockwise. It experiences a clockwise torque. It experiences a clockwise torque. About center of mass, there is a clockwise torque.
यानी अगर ये धरती ना होता, if this ground was not there, it would have rotated clockwise. So it has a tendency to rotate clockwise. It has a tendency to rotate clockwise, but you are preventing it. So it is trying to rotate clockwise. It is trying to rotate clockwise, and you are preventing it with this ground. So that means this front portion presses it down more than in the earlier case, and this is trying to go up. So here pressure decreases, but here pressure, the force increases. So in this case, your diagram would become like this. समझो इस बात को. Because it has a tendency to rotate clockwise in the absence of this ground, that means this point, these portions are trying to go down. They're trying to go down, but you have to prevent it. So you apply extra force. And these portions are trying to move up. So they have actually decreased their pressure. Although area under graph is same. जितना normal यहाँ है mg, total normal यहाँ भी वही है. But now the front portion is getting pushed more. That is why the center of, and in this case, because normal distribution is same, so center of normal is at the midpoint. But in this case, the center of normal shifts to the more normal side. Wherever the pressing is more, the normal shifts in this direction. So center of normal, or the point at which you can assume all normal to be concentrated, now shift rightwards. So in this case, normal shift rightward. If I ask you, how much distance this normal shifts? What is the distance by which this normal shifts? What is the distance by which this normal have shifted? Its line of action on the base to prevent rotational motion. How to get it? How to get it? So understand how to get it. Take torque about. So keeping its magnitude same, the normal shifts its line of action to prevent rotational motion. याद रखना, normal shifts. I can write it. Normal shifts its line of action. Normal shifts its line of action on base to prevent rotational motion. It's the duty of friction to prevent translational motion. It's the duty of torque normal to prevent rotational motion. वो base पे shift होता है. Now, if I want to know what is the distance by which it has been shifted, तो क्या लिखेंगे? I am going to get mg minus normal 0, fy 0. So I got normal. Second, f naught minus f is 0, fx is 0. This and this cancel, this and this cancel. Take torque about any point. Take torque about any point. You can take center of mass, or you can take the point of intersection of friction and normal on the ground. So let us say take torque about A. Torque about A. What is A? A is the point of intersection of friction and mg. A is the point of intersection of यह काम करो यहाँ ले लो. Take A as the point of intersection of friction and normal. Take A as the point of intersection of normal and friction. Then what would you write? mg into इसके about, इस axis के about torque क्या होगा? mg into x. mg into x. समझ रहे हो? About this point, mg into x. Because line of action of mg is at a distance x from here. mg into x must be equal to, बताओ इस पॉइंट से A से इसकी हाइट क्या है? लाइन ऑफ एक्शन की h, f naught into h. समझो? About this point, friction have no torque, normal have no torque. mg have torque anti-clockwise, mg into x, and this f naught have torque clockwise, f naught into this height h. इक्वेट कर दो. x कितना है बताओ? f naught into h by mg. ठीक है ना? f naught into h by mg. This is the movement of x. Why? To prevent rotational motion. So I increase f naught. So I increase f naught. It shifts more. f naught बढ़ाएंगे, x भी बढ़ेगा.
और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, कहां तक? इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द बेस। लास्टली अगर हम इसको प्रेस करते हैं इस तरह से, समझो, जब इसको यहां से प्रेस करते हैं या पुल करते हैं तो पहले तो ये ऐसे होता है और फिर जो है पहले तो ये होता है इस तरह से और उसके बाद दिस इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। पहले ये फोर्स को बढ़ाएंगे, नॉर्मल शिफ्ट करेगा, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट करेगा और यहां तक पहुंचेगा। नाउ इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द बेस, सो आफ्टर दैट it becomes to topple. This is the toppling. When the entire body comes on the edge and it leaves the back surface, rear surface contact lose कर दे, that is called initiation of toppling. So what is the meaning of toppling? हम चाहते हैं find the so when toppling starts, what is the meaning of toppling? समझो, once toppling starts when this becomes equal to L by 2, when x becomes equal to, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ और फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। After that it cannot go out. This is the last point up to which normal can shift. After that, once x becomes equal to L by 2, toppling starts. We say it is toppling. So base have a limitation. Base have a limitation. So we can know like this. We can know like this that once toppling starts, we would get like this. Once toppling starts, we are going to get like this. So we can say toppling initiates. Toppling initiates. इसका मतलब है it's like this. This is called toppling. Entire normal gets concentrated on a single line, single point. ये पूरा ground छोड़ देता है. This is called toppling. So once toppling starts, I can say normal should come here. Normal should come here. The applied force for which the normal comes here, I would say it started to topple about this point. In that case, x should become equal to what? L by 2. X should become equal to what? L by 2. Because from here to here, in that case you would get this is equal to F naught into H by mg. So you would get F naught for which toppling starts. F naught for which toppling starts, minimum force for which toppling starts is equal to L by 2H times of mg. ये ना? हाँ. Now why I am writing in this form? Because we have studied till now when the sliding starts. We have studied till now when the sliding starts. हमने ये पढ़ा हुआ है कि when the body slides, it's mu mg. When force is equal to friction coefficient into static friction coefficient into mg, it starts to slide. And when force becomes equal to L by 2H into mg, it topples. Now question is which happens earlier? This is the force required for toppling. And for sliding, the force required is F naught is equal to mu mg. So you have to compare L by 2H and mu. If I am increasing the force slowly, toppling takes place before sliding और sliding takes place before toppling. कौन पहले होगा ये डिपेंड करेगा out of L by 2H and mu, which is more, which is less. जो कम होगा वो पहले होगा. If mu is less than L by 2H, this force happens earlier, so there is sliding before toppling. If L by 2H is less than mu, then toppling takes place before sliding. ठीक है. अब यहां एक और चीज देखो, more is the length of the base, more force is required to topple it. बेस का लेंथ जितना बड़ा होगा,
जितना चौड़ा बेस होगा उसको टॉपल करना उतना मुश्किल है, और हाइट जितना ज़्यादा होगा टॉपल करना उतना आसान है। समझो, फॉर मी इट्स इजी टू टॉपल इन दिस केस बिकॉज बेस लेंथ इज स्मॉल एंड हाइट इज मोर। हियर टॉपलिंग इज easier than in this case when base length is large and height is small. More is the height. More is the height. Understand? More is the height. Easier it is to topple. Less and more is the base length. Difficult it is to topple. ये जनरल फेनोमेना, ये हम समझते हैं. If the base is very large, it's very. Now what is rolling? Rolling motion क्या होता है समझो, और क्यों व्हील को इतना ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड इज द व्हील, सर्किल. क्यों? बिकॉज सर्किल हैव ए वेरी गुड प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? सर्किल हैव ए वेरी गुड प्रॉपर्टी. इट इज इन कॉन्टैक्ट. दिस इज इन कॉन्टैक्ट ओनली एट ए पॉइंट. बट द बेस लेंथ जीरो. बट द बेस लेंथ जीरो. तो जैसे इसको ऐसे लगाओगे फोर्स, once you apply the force it topples. Since base length is 0, even delta F force 0.0001 न्यूटन में लगाओगे because base length is 0. base length है ही नहीं. ये जो लेंथ दिख रहा है ना बेस का, ये सर्किल और इसके बीच में 0 होता है. इसलिए once you apply force here, there is no space for this normal to shift. This normal cannot shift in the case of a sphere और इन द केस ऑफ सर्किल. अगर कोई सर्किल है, इन दिस केस नॉर्मल इज लाइक दिस. नाउ यू वांट टू, यू पुल इट बाय फोर्स एफ. नॉर्मल ट्राइज टू शिफ्ट ऑन द बेस बट देयर नो बेस, देयर नो एरिया ऑफ द बेस, देयर नो स्पेस टू शिफ्ट. सो व्हाट हैपेंस? इट टॉपल्स. दिस टॉपलिंग, continuous toppling is called rolling. This continuous toppling, one after another is called rolling. So rolling is a continuous toppling about the base point. That is called instantaneous axis of rotation. बताएंगे सब. तो बेस जो होता है, so this is continuous toppling. It's impossible that in the case of sphere, in the case of disc, in the case of wheel, in the case of cylinder, you have no toppling. Toppling होगा ही होगा. Always. It always sliding takes place before toppling. Sorry, toppling takes place before sliding. Always toppling takes place. That continuous toppling one after another is called rolling motion. So rolling is nothing but continuous toppling. ठीक है? अब समझो. This is called impinging. Now in toppling you have 3 type of cases. And I am going to incorporate all the cases. In toppling you have 3 types of cases. One is toppling on the ground, other is toppling on inclined plane, and third is toppling in the pseudo frame. ठीक है? तीनों मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, समझो. And remember that whenever you draw any kind of force diagram, it must justify its rotational and translational equilibrium both. और rotational equilibrium को justify करने के लिए the normal should shift in such a manner that the torque is zero. Understand? पहला, हम toppling के cases ले रहे हैं. Toppling cases. First, toppling on ground. ये ग्राउंड है. ये ब्लॉक है. हाइट h, लेंथ l, और यहां तुम इसको पुल कर रहे हो. ये क्यूबॉइडल ब्लॉक है. ये सॉलिड कोन है.
हॉलो कौन है? सॉलिड हेमिस्फेयर है। हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। रफ सरफेस सब रखे हुए हैं। नाउ यू आर पुलिंग इट बाय फोर्स एफ। हियर यू कैन पुल इट फ्रॉम हियर, और यू कैन शिफ्ट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। You are pulling it from here, you are pulling it from here, and you are pulling it from here, or you can shift, you can pull it from here also. तुम यहाँ से इसको pull कर सकते हो, यहाँ से pull कर सकते हो, it's your choice. Now understand, in this case, toppling means the normal reaches here. The normal reaches here, that means that is going to topple. The normal reaches here, friction is here. Normal is here, friction is here. Normal is here. When the normal reaches at this end, that means the toppling is going to start. Normal reaches here, friction is here. Normal reaches this end, friction is here. ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद टॉर्क ले लो। किसके अबाउट? दिस एक्सिस ए के अबाउट, इस ए के अबाउट टॉर्क ले लो सब में। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ लिखोगे mg हियर था, तो एफ फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन नॉर्मल का टॉर्क सब में जीरो। यहां क्या लिखोगे? mg इंटू एल बाई टू बेस बाई टू, mg इंटू एल बाई टू शुड बी इक्वल टू एफ इंटू एच। यहां लिखोगे mg इंटू आर, दिस रेडियस हियर, mg इंटू आर इज इक्वल टू एफ इंटू एच। अगर इसकी हाइट h है तो गेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, this torque is F into H and this is mg into R. Here see mg here, F here, this is height H. So same thing, mg into R, mg into R is equal to F into H. This is the force at which toppling starts. Here mg into R is equal to mg into R is equal to F into R. mg into R is equal to F into H. And in this case mg into same R is equal to F into force F into R. ठीक है। Now you can compare which happens first depending on the value of friction coefficient given. Whatever force you are getting here, mg को बाहर कर दो, F by 2h, L by 2h, L by 2h times of mg here. Here what? F is equal to R by h times of mg. Here F is equal to R by h times of mg. Here F is equal to mg. Here F is equal to mg. And you know the force required for sliding is mu times of mg. Compare here L by 2h with mu. Whichever is less would happen first. Whichever is less would happen first. ठीक है। दूसरा toppling on inclined plane. Toppling on inclined plane. Now for this you have to remember the center of mass. After first class I gave you the formula sheet of center of mass of various bodies. So that you have to remember. So on incline, on rough incline. देखो मान लो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये L ये L। मान लो ये एक कोन है, कोई एक कोन ले लेते हैं, सॉलिड कोन ले लेते हैं, सॉलिड कोन है। और ये मान लो हॉलो हेमिस्फीयर या सॉलिड हेमिस्फीयर है। चलिए हॉलो हेमिस्फीयर लेते हैं। ये है क्यूब, दिस इज द क्यूब, this angle is theta. This is the cube, this is solid cone, this is hollow,
सेमी स्फीयर, इसकी हाइट है h, रेडियस है r, इसकी रेडियस है r. What is the meaning of toppling? First of all, understand that normal should reach here. Friction is acting like this. इन सब में तुमको क्या करना है? You have to take a force. You have to take a force on the center of mass. सबका अपना एक center of mass होता है. You take a force on the center of mass with component form. Component form means one component in the direction of mg, in the direction of incline, and one normal. Means here you are going to take mg sin theta here, mg cos theta here. Here you are going to take on this center of mass mg sin theta here, mg cos theta here. Here you have to take mg sin theta here, mg cos theta here. ठीक है, ये सब इसके सेंटर ऑफ मास पे है. mg sin theta and mg cos theta, and you know that normal and friction is here. Also here you would get normal and friction is here. So normal और friction यहाँ होगा, normal friction यहाँ होगा. Here you would get normal, here you would get friction, here you would get normal, because toppling means about to topple. Normal here and friction here, like this, like this. If I take it like this, it would topple. ये तो slip कर गया. This is toppling before, this is sliding before toppling. Okay, let us see. ये भी इसके साथ वही हो रहा है. Okay, so we can take like this. Height ज़्यादा होने से better होता है. It topples. So in that case we can get it like this. So what we are going to get is that. अब क्या करना है समझो. Take torque about point A. Take torque about this point A. That is point of intersection of, because ये अभी पीछे अपना ground छोड़ेगा. This is going to leave. This is going to leave surface from here like this. A and A. The point of intersection of. This is the axis. I have told you we are showing axis normal to the plane of the figure. So what you are going to get? Friction and normal have no torque. Mg have two torque. In this case you would get mg cos theta into L by 2, base length by 2. See, about this point mg cos theta into base length by 2 is equal to mg sin theta into this height by 2. If this is cube, this is L by 2, and if this is cuboid, this height is h, this would be h by 2. देखो इसके बाद टॉर्क निकालोगे, mg cos थीटा का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा बाय 2 इंटू बेस लेंथ का हाफ क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क होगा mg sin थीटा का, इसके अबाउट mg sin थीटा इंटू दिस हाइट बाय हाफ. यू कैन गेट हियर. इसके बाद टॉर्क निकाल रहे हो, जब इसके बाद टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा? mg cos थीटा का क्या होगा बताओ? mg cos थीटा इंटू रेडियस. mg cos थीटा यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना है? r पे. mg cos थीटा इंटू रेडियस इज इक्वल टू, यहां बताओ ये है mg sin थीटा इंटू सॉलिड कोन का जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h by 4. सॉलिड कोन में होता है बेस से h by 4, हॉलो कोन में होता है h by 3. सॉलिड कोन में होता है h by 4. यहां तुमको सेंटर ऑफ मास चाहिए, बिना सेंटर ऑफ मास के नहीं होगा. h by 4, और अगर ये हॉलो कोन होता तो कितना होता है? h by 3. ये हो जाएगा बताओ, यहां हो जाएगा इंटू h by 4. निकल गया वो थीटा, टेन थीटा, जहां पे क्या होगा? स्लिपिंग होगा. यहां बताओ, यहां पे टेन थीटा क्या आएगा? mg से mg कट गया. यहां टेन थीटा क्या आएगा बताओ? टेन थीटा आ जाएगा 4r by h, होगा ना? इस थीटा पे वो टॉपल कर जाएगा. कहां पे? टेन थीटा इज इक्वल टू 4r by h. लेकिन तुम जानते हो जब टेन थीटा म्यू एस होता है, जब टेन थीटा क्या होता है?
म्यू एस होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जब tan थीटा म्यू एस होता है, दैट इज द एंगल एट विच स्लिपिंग टेक्स प्लेस। tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां पे स्लिपिंग होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 4r/h पे क्या हो रहा है? टॉपलिंग हो रहा है। अगर तुम थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो विच हैपेंस अर्लियर, यू कैन कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर आउट ऑफ म्यू एस एंड 4r/h विच इज लेस। जो पहले होगा, क्योंकि मान लो ये 30 डिग्री है और ये 28 डिग्री है, then once you cross 28 डिग्री toppling takes place before sliding। बट अगर ये 30 डिग्री और ये 32 डिग्री है, इसका मतलब है sliding takes place before toppling, whichever is less out of these two, that happens earlier। Similarly यहाँ पे देखो, इसके बाद तो खत्म, हॉलो कौन है, तो क्या करोगे यहाँ पे mg इंटू क्या लिखोगे, इस पॉइंट ए के अबाउट, इस एक्सिस ए के अबाउट जो टॉर्क होगा mg cos थीटा इंटू दिस लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ई एट ए डिस्टेंस ऑफ r, एंड दिस mg cos थीटा फ्रॉम दिस पॉइंट a is at a height of r/2, mg sin theta into r/2, so you would get tan theta। तो ऐसा तुम कहीं भी कर सकते हो, यू कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स इन एनी प्लेस, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। सो दिस इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। अंडरस्टैंड दैट इफ आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस, इफ आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस, यहां टॉपलिंग नहीं हो रहा है, नॉर्मल कहां पे है, वेयर इज द नॉर्मल? आई कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस अदर देन दिस ऑल्सो, बताऊंगा। पहले जो है थर्ड केस पे, थर्ड केस क्या है? टॉपलिंग इन द केस ऑफ स्यूडो फ्रेम इन एक्सेलरेटेड फ्रेम इफ समथिंग टॉपल्स, इन एक्सेलरेटेड फ्रेम इफ समथिंग टॉपल्स, तब क्या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? सो आवर थर्ड केस इज टॉपलिंग ऑन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, आवर थर्ड क्वेश्चन पार्ट इज टॉपलिंग इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगेन you have to have the concept of center of mass, center of mass is essential here also, here also you have to get the concept of center of mass। third case, our third case is toppling in accelerated frame, toppling with pseudo force। ये ट्रक है समझो, ये ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर यहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड या जो भी हो, ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसका रेडियस है r, हाइट है h, एक सॉलिड कोन रखा हुआ है, एक सॉलिड कोन रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, ये कोन है, और एक सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे करके सॉलिड हेमिस्फीयर रखा हुआ है। नाउ दिस ट्रक एक्सिलरेट्स, नाउ दिस ट्रक एक्सिलरेट्स विद एक्सिलरेशन a naught। फाइंड द एक्सिलरेशन फॉर विच इट टॉपल्स एंड फॉल्स। अगर किसी गाड़ी के ऊपर ये रखा हुआ है और गाड़ी बहुत तेज चले, ये हो सकता है ड्रम टॉपल करके गिर जाए। What is the force for which it topples? So in these cases, what you have to do is, what is your working principle is that you work in this frame because it is accelerated in ground frame. At least it has a translational acceleration in ground frame, but it has to stop with respect to truck frame. So try in truck frame. In vehicle frame, truck frame. Now, since the frame itself is accelerated, since the frame itself have acceleration a naught, जो देखने वाला है ऑब्जर्वर वो खुद एक्सिलरेटेड है, सो ही इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो ही हैव टू टेक वन एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। वो क्या करेगा? स्यूडो फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? जिधर उसका खुद का एक्सिलरेशन उसका उल्टा।
If the observer have acceleration towards east, the pseudo force he should take towards west. If the observer have acceleration towards north, he should take an extra force towards south. तो ये क्या करेगा, ये इस पे एक लगाएगा फोर्स एम ए नॉट, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स. ये इस पे लगाएगा फोर्स कितना, एम ए नॉट. एंड रिमेंबर स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स on the center of mass. Pseudo force always acts on the center of mass. Why? Why pseudo force acts on center of mass? Because for this person, this whole thing is in a uniform accelerated. देखो जिस तरह से ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन ये यूनिफॉर्म फोर्स, तो इसका मतलब चूंकि इसका एक्सीलरेशन ए नॉट है, ये m1 पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाएगा, m1 ए नॉट, m2 पे क्या लगाएगा, m2 ए नॉट, m3 पे क्या लगाएगा, m3 ए नॉट. जब भी हर पार्टिकल पे फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट मींस जो फील्ड कांस्टेंट होता है, तो उसका सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ आएगा, m1 ए नॉट r1 प्लस m2 ए नॉट r2 प्लस m3 ए नॉट r3 बाय m1 ए नॉट प्लस m2. ए नॉट कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो वो सेंटर ऑफ मास पे है. जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है, चाहे ग्रेविटेशनल हो और चाहे वो स्यूडो फील्ड हो, ये एक किस्म का क्या है, स्यूडो फील्ड है. ये हर पार्टिकल पे, इसके हर पार्टिकल पे क्या करेगा, उस पार्टिकल का मास इंटू सेम ए नॉट लेगा, इसलिए उसका सेंटर ऑफ फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे आता है. ये यहां क्या लगेगा, यहां लगा देगा. ये एक फोर्स ले लो. दूसरा क्या करोगे, अब सोचो तुम इस पे फोर्स इधर लगा रहे हो, अब इसको टॉपल होना है, तो टॉपल अगर होना है तो हम पहले ये जानना चाहते हैं नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, आगे या पीछे. तो एक काम करते हैं, नॉर्मल को लेते ही नहीं है, एम जी यहां डाल दिए, एम जी यहां डाल दिए, एम जी यहां डाल दिए, ठीक है. इसको कैंसिल होना है क्योंकि इस फ्रेम में इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, इसमें फ्रिक्शन ऐड करेगा, इधर फ्रिक्शन ऐड करेगा राइटवर्ड, समझ रहे हो. ग्राउंड फ्रेम में देखो तो ये एक्सेलरेटेड है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण. इस फ्रेम में देखो ये रेस्ट पे है, तो स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन को कैंसिल होना है. अब नॉर्मल को भी कैंसिल, एमजी को भी कैंसिल करना है, यानी नॉर्मल कहां लेंगे, ऊपर लेंगे. एमजी को कैंसिल करना है, नॉर्मल तो ऊपर ही चाहिए, ये तो समझ गए नॉर्मल ऊपर होगा. ना कहां लगाएं कि टॉर्क जीरो हो जाए, आगे लगाएं, पीछे लगाएं कि यहां लगाएं. अगर हम नॉर्मल यहां लगाते हैं, सोचो अगर हम नॉर्मल यहां लगाते हैं, सेंटर से पास करा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा. क्या गड़बड़ होगा, इस सेंटर ऑफ मास को देखो, एमजी भी इससे पास कर रहा है, स्यूडो फोर्स भी इससे पास कर रहा है, और नॉर्मल भी इससे पास कर रहा है, तो इन तीनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा. बट फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर तुम पॉइंट सी के अबाउट अगर बैलेंस करना चाहते हो, टॉर्क को जीरो करना चाहते हो, तो इस फ्रिक्शन का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था उसको बैलेंस करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज देना होगा. तो सी के अबाउट अगर नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए तो उसको यहां जाना होगा. यही एक यहां पे देखो, सी के अबाउट mg और m नॉट का टॉर्क तो फिक्स है, जीरो. mg एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास एंड स्यूडो फोर्स एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास. इन दोनों का टॉर्क तो सी के अबाउट जीरो होना श्योर है, ये तो चला गया. अब बचा फ्रिक्शन और नॉर्मल. फ्रिक्शन हमको पता है, फ्रिक्शन बेस पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अबाउट इसको घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज. इस पॉइंट सी के अबाउट ये घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज. इसको बैलेंस होना है तो इसका उल्टा चाहिए. अगर नॉर्मल इधर होता तो ये उसको और हेल्प करता, तो जीरो टॉर्क होने के लिए इसको इधर जाना पड़ेगा. सिमिलरली यहां देखो, सिमिलरली यहां देखो, इसके अबाउट देखो, mg और m ए नॉट का टॉर्क जीरो, तो नॉर्मल को यहां आना होगा, नॉर्मल को यहां आना होगा, सब में यही होगा. यानी कि जब ये टॉपल करेगा तो ये पीछे टॉपल करेगा. कैसे, जब ये गाड़ी इधर एक्सेलरेट करेगी, जब गाड़ी इधर एक्सेलरेट करेगी, ये पीछे टॉपल करेगा. ऐसे गिरना होगा तो ऐसे गिरेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स के ऊपर लग रहा है इधर, तो लग रहा है वो उसको घुमाना चाह रहा है, उसको गिरा देगा ऐसे. अब समझो, अब क्या लिखोगे, पॉइंट ए के अबाउट. कौन सा पॉइंट, वो एज जिसके ऊपर ये खड़ा हो गया था,
गिरने से पहले इस पॉइंट ए के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो, तो बचा एम ए नॉट और एम जी का टॉर्क। तो यहां क्या लिखोगे बताओ, एम जी इंटू रेडियस, एम जी इंटू रेडियस मस्ट बी इक्वल टू एम ए नॉट इंटू एच बाई टू, क्योंकि इसकी सेंटर मास की हाइट h बाई टू होती है। यहां क्या लिखोगे बताओ, यहां क्या लिखोगे फर्स्ट केस में, ये तो गया फर्स्ट केस में, क्या लिख दोगे, mg इंटू आर क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ए, वी आर टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, mg इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू एम ए नॉट इंटू एच बाई टू। यहां क्या लिखोगे, mg इंटू क्या होगा बताओ, r इज इक्वल टू एम ए नॉट इंटू, अगर इसकी हाइट h थी तो सेंटर मास की हाइट जो है होती है h बाई फोर, किसके लिए, सॉलिड कोन के लिए। हॉलो कोन में क्या होगा, h बाई थ्री। यहां क्या लेंगे बताओ, mg इंटू इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, सो mg इंटू r मस्ट बी इक्वल टू, mg इंटू r मस्ट बी इक्वल टू एम ए नॉट इंटू, सॉलिड कोन की हाइट होती है 3r बाई एट, 3r बाई एट। सॉलिड हेमीस्फेयर का, सॉलिड होता है हेमीस्फेयर, उसका जो हाइट होता है सेंटर ऑफ मास का वो होता है 3r बाई एट। हॉलो अगर है तो होता है r बाई टू, हॉलो में क्या होता है r बाई टू, ये हो गया 3r बाई एट। यहां से तुम्हारा a नॉट निकल जाएगा, किस एक्सेलरेशन पे ये क्या होगा, टॉपल कर जाएगा। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन एक कार को, एक ट्रक को नहीं लेना चाहिए, कोई भी सामान रखा हुआ है तो वो उसके ऊपर गिर जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड केस, दैट इज द थर्ड केस। सारे टॉपलिंग के क्वेश्चन इसी में होते हैं, सारे टॉपलिंग के क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई होता है, सेंटर मास याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमसे हम एक क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से पूछ दें, कैसे पूछें हम, अगर तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दें कि मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर हमने क्या किया है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मान लो मैंने एक जो है ऐसे करके एक, चलो क्यूब ही डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सो ये क्यूब है, ये एंगल है थीटा, इसकी लेंथ है। वेयर इज द नॉर्मल एक्टिंग, नॉर्मल कितनी डिस्टेंस शिफ्टेड है और कहां एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पूछा गया है। वेयर इज द नॉर्मल एक्टिंग, तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं mg यहां पर है, फ्रिक्शन यहां ऐड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन यहां ऐड करेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, नॉर्मल यहां मान लो ऐड कर रहा है यहां पर, बिकॉज नॉर्मल कैन नॉट एक्ट। चलो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल को सेंटर से पास कराते हैं, तो इसको क्या करते हैं, mg को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। नाउ कम टू नॉर्मल, अगर नॉर्मल हम यहां से पास करा दे सेंटर से तो क्या होगा, इट इज नॉट जस्टिफाइंग इट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। व्हाई, बिकॉज इफ द नॉर्मल passes through center of mass, if the normal passes through center of mass, that means mg have no torque about center of mass, neither mg cos theta nor mg sin theta nor normal का भी कोई टॉर्क नहीं है, बट एक टॉर्क तो है फ्रिक्शन का, जो यहां से कुछ डिस्टेंस नीचे है, तो उसको बैलेंस कौन करेगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर मास के अबाउट ऐसे था, फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर मास के अबाउट इस तरह से था, तो नॉर्मल को इसको बैलेंस करने के लिए अपना लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा सामने, नॉर्मल शुड बी हियर, नॉर्मल को अपना लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड, सो दैट दिस नॉर्मल कैन बैलेंस और प्रोवाइड ए टॉर्क ऑपोजिट टू द टॉर्क प्रेजेंट ड्यू टू इन इट्स एब्सेंस। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो ये मान लो, तो नॉर्मल इज इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इज जीरो, फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इज जीरो। ये तो हो गया ट्रांसलेशन का इक्वेशन। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा इन मैग्नीट्यूड एंड नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा इन मैग्नीट्यूड। नाउ टेक दिस पॉइंट A, the point of intersection of friction and normal. Take this point A, the point of intersection of friction and normal.
सपोज दिस नॉर्मल शिफ्टेड बाय डिस्टेंस x, सेंटर ऑफ मास से ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर गया था, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से नीचे शिफ्ट कर गया था डिस्टेंस x. If you want to find torque about point A, then friction have no torque, normal have no torque. So what you would get is that mg cos theta, you would get mg cos theta. So about this point A, about this axis passing through A, mg have the torque mg cos theta into x. mg cos theta, देखो mg cos theta का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे. इट मस्ट बी इक्वल टू, इट मस्ट बैलेंस mg sin theta, mg sin theta into this height. What is this height? L/2. तो तुम क्या देखोगे, आ जाएगा mg कट गया, x इज इक्वल टू L/2 tan theta. इतना डिस्टेंस से शिफ्ट कर चुका है. दिस नॉर्मल हैव शिफ्टेड बाय L/2 tan थीटा. तो हम बता सकते हैं नॉर्मल कितना शिफ्ट किया है, बिकॉज आवर FBD, आवर फोर्स डायग्राम मस्ट जस्टिफाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम. नॉर्मल ही एक ऐसा फोर्स है जो शिफ्ट करेगा और कोई फोर्स शिफ्ट नहीं करता है. दैट मीन्स यू हैव टू वाइजली चूज. जो IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, IIT ने क्वेश्चन पूछा था, देखना प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा. ये क्यूब है, ये क्यूब है और एक रफ सरफेस है. इसके सेंटर पे आप इसको पुश कर रहे हैं ऐसे, mg हाइट कर रहा है. नॉर्मल किधर ऐड कर रहा है, ऊपर या नीचे? नॉर्मल कहां ऐड कर रहा है, ऊपर या नीचे? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, यहां फ्रिक्शन है. सो नॉर्मल इज एक्टिंग हियर और हियर और हियर. तो बताओ, अगर हम नॉर्मल को यहां से पास करा दें, अगर हम नॉर्मल को यहां से पास करा दें सेंटर से, तो F का टॉर्क भी जीरो सेंटर मास के अबाउट, mg का भी जीरो और F का भी जीरो, mg का भी जीरो और नॉर्मल का भी जीरो. सेंटर मास के अबाउट सबका टॉर्क जीरो हो जाएगा, बट इसका तो जीरो नहीं होगा, इसका तो टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा. अब इसका टॉर्क बिकॉज क्लॉकवाइज है, हमको नॉर्मल का टॉर्क क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. बिकॉज इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, समझो इसका टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसका टॉर्क हमको नॉर्मल का क्या चाहिए. देखो सेंटर मास के अबाउट mg का टॉर्क जीरो, अप्लाइड फोर्स उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो टॉर्क जीरो. सो अगर इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो हमको इसका टॉर्क चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल को इसके नीचे जाना होगा. Because in that case, about this center of mass, there are two torques. One is clockwise due to friction and one is anti-clockwise due to normal, and they should balance. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार और पूछा है. इंक्लाइन प्लेन पे पूछा है, इंक्लाइन प्लेन पे पूछा है, इस तरह से रखा हुआ है. वेयर इज द नॉर्मल पासिंग, नॉर्मल शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड बाय व्हाट डिस्टेंस, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज है. तो now we have to take the next topic, and that is अब जो हम लोग लेंगे, that is fixed axis rotation. Tau is equal to I alpha, fixed axis rotation. Torque is equal to moment inertia into alpha. इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिफोर वी आर कमिंग टू रोलिंग. रोलिंग इसके बाद का टॉपिक है. Tau is equal to I alpha, fixed axis rotation, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ठीक है, किसी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना. ओके, थैंक यू सर. चलो बाय.